Okay, a warm good morning, dear students. We continue from where we had left yesterday, but before that, I had given you an assignment. How many of you have done that? Okay, try ke liye laye. Right, so could you read out? So the assignment that was given yesterday was, I had given a simple direct question. What were the factors that led to industrial revolution in England? Yeah, write the introduction. At various factors in social considered in the single island converse activity and the easy for industries than high. Due to its investments in industry and step towards democracy and of power over individual. It was a politically stable no involvements with the in class things, courtyards, the support of capital as they own their own factory. Several laws such as ethical navigation were passed which activities. Due to the encroachment, labors were available. Okay, now just read the conclusion if you've written. At the last point. Okay. So, first and foremost, a good try. Welcome to all the students who are attending online also on YouTube. It's a good try. You have got good language competence also. And the introduction is okay, but conclusion is very crucial. So you can't afford to miss the conclusion. When we are writing conclusion in history answers, how can we do it? So two things, easily you can do. Whenever you're writing a conclusion of history answer, you can write a statement that will talk about one, the importance of what we have discussed, whatever the answer was. उसका महत्व क्या है? You can talk about that. Okay. Second thing that you can do is whatever was discussed, how that became a base for subsequent development. Base for subsequent development. Got it? So using this, can you construct a conclusion? Easily you can do that. We just require 1 or 2 sentences max. We don't have more time space than that, right? आपने भी लिखा है? Can you just read the introduction first for me? combination of factors as well as positive political work from where access to global trade, rules and innovation fostered by the Enlightenment. ठीक है. A good try again. You also have fairly decent language competence too. You've understood the demand of the question as well. लेकिन अब आप दोनों ने भी ये ध्यान में रखना है. Try to structurize your answer. Structurize as in, although you have written in a flowing manner, but if your answer has a clear-cut structure, just like we saw, na, how geography enabled it. If there is a headline and then below that you have points, it makes the job of the examiner also easy. Okay, so you are very clear cut telling the examiner, see, I've understood the entire story, and see, I have geography points, I have economy points, I have polity points, I have social points. Okay, and then that stands out very well. So henceforth, always try to write answer with
clear headings and sub points under that. Got it? Okay. Introduction के अंदर में in one sentence we have to try to capture the essence of the demand of the question. Mid 18th century England, due to a combination of geographical, social, economic, and political factors, was poised to go through a industrial revolution. These factors were as follows: dash, geographical factors 1 2 3 4, economic factors 1 2 3 4. So visibly when you see it on the paper on 2 pages, it's very easy for the examiner also to correct it. Got it? Okay, so next time around remember this point. All right, okay, so good, you have tried. Others who haven't, answer writing is very important. You should make it a point that you write answers. Every other day I'll try to give you assignments on answer writing, and then slowly steadily we'll build it up. Okay, Chali. So yesterday we had reached up to the point where we were discussing the spread of industrial revolution. Okay? And in the spread of the industrial revolution, please come. In the spread of the industrial revolution, we have seen spread of it to Japan, we have seen it to Russia, we have seen it to USA. Now we are talking about spread of the revolution to colonies. Okay? By now, you remember all of that discussion, how colonies were formed? Fall of Constantinople, search for safe route, geographical discoveries, and from that colonies are formed. Okay? What are colonies formed for? Yes, colonies are formed for two reasons. One, obviously, is they want to exploit the resources, natural resources. Okay? Colonies then started to provide raw material also. Okay? Resources. And second thing is, what is the second thing that colonies provided primarily? They gave market. Okay? Raw material and market. Always remember these 2 points. As soon as we talk about colony, you have to remember these. Now, to exploit these resources and access the market, obviously, the entire polity and economy of the colony was subjugated to the motherland's economy, polity. Okay? Just say, for example, when British goods came to India, they were charged a duty of 2 to 8%. Okay? Who is doing this? The British government of India. Whereas when Indian goods went to Britain, they were charged as much as 400%. Why is this being done? Because they want to subjugate the polity and economy of the colony. Complete control so that motherland's interests are taken care of. Clear everyone up to this point? Okay. चलिए आगे बढ़ते. Now the motherland, Britain being the best example. इसको English में वैसे remember this term also. It's called as metropole. So Britain, France, and then others like Belgium, etc., who had colonies. These European countries are called as metropole. Okay. Now the metropole never wanted that industries should come up in the colonies. Why? Because if industries come up, then there will be local competition to their products. So obviously it was not in their interest. They wanted only two things: raw material and market. These two things का आपको supply करना है. And through the trade that was going on with these colonies, motherland started to accumulate capital. Capital is the catalyst which starts, the industry. Without capital, without factory coming up, how are we going to have industrial revolution? Okay. And how is capital going to come about? Through the control of trade with the colonies. You export more and more, import less and less, okay? Make profits in that process, and that leads to accumulation of capital. Okay?
We have seen the idea of mercantilism. You remember we had a detailed discussion on this? Mercantilism. This was the whole philosophy of mercantilism. Okay, accumulation of capital. Apart from this, what did the colony provide? The colony gave labor. What did it provide? Labor. Okay. Cheap labor that was used in different areas of the colonial empire. अगर आपने, if you follow cricket, you'll see that in the West Indies team, you come across a lot of Indian sounding names, right? So right from Shiv Narayan Chandrapal to Sunil Narayan, है ना? Have you noticed that? How did West Indies have, Indian name? West Indies was on the other side of the globe. 1833 में दोस्तों, in 1833 ब्रिटेन ने एक लॉ पास किया जिसमें स्लेवरी वाज नाउ बैंड. स्लेवरी को बैन कर दिया. ठीक है. मैंने कल आपको ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड बताया था, हाउ स्लेव्स वर ट्रेडेड. 19th century is century of liberalism. Liberalism is a philosophy that talks about individual rights, है ना? Individual rights and freedoms. Now, liberalism was at its peak as an idea. It was at its peak in Britain in the 19th century. So there was a contradiction. On one side, we are talking about liberalism, and on the other side, in our own empire, we are practicing slavery. Can you see the hypocrisy of it? Can you see the contradiction? Therefore, there was pressure in Britain that we should end this practice of slavery. So law was passed and slavery was ended. But now the problem was that when slavery is not there, how are you going to get cheap labor to do a lot of work that is to be done in the distant areas of the colonies? Okay. So इसमें से practice शुरू हुई of what is called as indentured laborers. भारत से खास तौर पे especially from Bengal, Bihar and from Tamil Nadu, we see that a lot of Indian labor was taken on contract to distant parts of the British Empire to work for them. हमारे यहाँ पर में unemployment था क्योंकि local industry was finished, economy was in ruins, there were constant famines in India. ठीक है. So for survival, people needed some work. So through fraud and force, many such indentured labor contracts were signed with Indians, and these Indians were then taken to distant places. South Africa, Caribbean islands, Fiji in Pacific Ocean, then a lot of them to Mauritius also. So इस तरीके से बहुत सारे भारतीय जो है वो दूर दराज के इलाके में ले जाए गए और उनको चीट किया गया. ठीक है. Once they went there, they had hoped that they will work for some time, earn some money and come back. But once they went there, there was no way for them to return and they got settled over there. And that's why you see Mauritius के कई प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हुए हैं जिनके नाम जो है वो इंडियन साउंडिंग है. It is this community of indentured labor were Fiji के अंदर में similarly. Okay? So the colonies also provided what? Labor. तो क्या क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल, मार्केट, थ्रू ट्रेड कैपिटल इज accumulating, they're also getting labor. Now when all of this was being done, शुरुआत के दौर में इनिशियल फेज में there was very little political enlightenment in the colonies. But as time went along, we see that the political consciousness in the colonies also starts to rise. है ना? और जैसे जैसे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस राइज होता है वैसे वैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है. एजुकेशन, हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड अलोंग विद दैट आल्सो केम सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कॉलोनीज which was not there earlier, modern infrastructure.
Like for example, railways. You see, in 1853, Lord Dalhousie, he is going to start railways in India. Lord Dalhousie wanted to do that. And in 20 years' time, so by you reach mid 1870s, major towns, presidency towns, were connected. And then in another 20 years, by the time you reach the end of the 19th century, you'll see a very structured network of railway connecting the length and breadth of the country. तो इससे कॉलोनीज को फायदा हुआ इनडायरेक्टली, डेफिनेटली हुआ. बट यस, ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉलोनीज, दे वांटेड इट फॉर देयर ओन बेनिफिट. कैसे? दो चीजें इससे हो सकती थी. वन वाज मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स. क्या था? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स. बिकॉज ऑफ द रेलवेज. जैसे देखिए, एक ट्रेन चलती थी फ्रंटियर मेल. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. फ्रंटियर मेल नाम की ट्रेन थी. इट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई and it used to go up to Peshawar. Okay. And this train was back then, I'm talking about early 20th century, it was a AC train. It had AC compartments also. So Europeans who used to come to India, they used to land at the Mumbai port, and then from there they have to go to distant places. How will they go? They can't travel by road, it will take several months. So for them, in 8 days time, 8 दिन में they could go to the farthest point of the empire, that is up to Peshawar. Got this idea? So इससे क्या होता था? Civil servants, railway के अंदर में troops, these could be easily mobilized. And this was one train. There was Punjab Mail, Calcutta Mail, so on and so forth. So like that, the troop movement was facilitated. This is one. Second is exploitation of resources. हमारे यहाँ विदर्भ में कॉटन ग्रो किया जाता है. Now this cotton was required in Britain. How are we going to take cotton from deep inside Vidarbha to Britain? So railways was used to transport that cotton right up to Bombay, and then from Bombay it could be taken to Britain. So two reasons why this infrastructure was developed, but indirectly it benefited Indians also. Okay, we also got some access to travel and transport, so इससे भारत को भी फायदा हुआ. Railways हुआ. Similarly, ports. Karachi का port was developed. Bombay का port was developed. Aden, back then Aden जो यमन में है, that was also part of British India. तो उस port का भी access जो है वो मिलता था. From there you could travel to other parts. So in this manner, ports came up. Telegraph lines were laid out. लॉर्ड डेलाउजी ने 1850s में ही टेलीग्राफ की लाइन, टेलीग्राफ समझते हैं, तार, आपने यूज नहीं किया होगा, बट यू नो इवन इन 90s तार वाज अ कॉमन मींस फॉर क्विक कम्युनिकेशन. इफ यू वांटेड टू सेंड सम अर्जेंट मैसेज टू एनी पार्ट इन द कंट्री, यू कुड सेंड इट वाया टेलीग्राफ. पोस्टल डिपार्टमेंट में होता था, आप पोस्ट के डिपार्टमेंट में जाते थे और वहां पर में जाके बोलते थे कि भाई ये मैसेज हमको भेजना है, पर लेटर वो लोग चार्ज करते थे उसका. फॉर एग्जाम्पल, रमेश स्वामी पास्ट अवे, ये आपको मैं जनरली नेगेटिव ही न्यूज आती थी उसमें. तो रमेश स्वामी पास्ट अवे, तो जितने लेटर्स हैं उतने पे आपको चार्ज किया जाएगा. और आप सपोज यहाँ पूना के जीपीओ से आप भेज रहे हैं, इट विल बी सेंड टू से चेन्नई का जीपीओ, और चेन्नई के जीपीओ में बताया जाएगा कि भाई ये जो मैसेज है ये फलाना एड्रेस पे भिजवाना है चेन्नई में. ओके, सो द मैसेज ऑल्सो गोज, एंड देन देयर द पोस्टमैन, उसको प्रिंटेड मिलेगा वो मैसेज, और वो पोस्टमैन जो है वो दौड़ता भागता हुआ जाएगा. 24/7 वो जनरली अवेलेबल रहती थी सर्विस, और वो दौड़ता भागता हुआ जाएगा और जा करके देगा, क्योंकि कुछ अर्जेंसी होगी तभी टेलीग्राफ यूज होता था. ठीक है, सो दैट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन 1850s, जिसको हम 1990s तक भी हम यूज कर रहे थे. फिर टेलीफोन्स बहुत कॉमन हो गई, तो उतनी उसकी ऑब्वियसली जरूरत नहीं रही. गॉट दिस आइडिया? सो कहां से आया ये? अगेन, ब्रिटिशर्स डिड दिस in the colonies.
ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स कर रहे थे ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट, बट समहाउ इट आल्सो हेल्प्ड इंडियंस. देन इकोनॉमिक सब्जुगेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं. वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलोनीज. वुड्स डिस्पैच, ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, डोंट वरी. 1854 में वुड्स डिस्पैच आया और इसने होल हार्टेडली जो है एक तरीके से ये कहा कि एक फुल फ्लेज्ड एजुकेशन सिस्टम भारत में डेवलप होना चाहिए वेस्टर्न लाइंस पर. ठीक है? और यहाँ से फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारा स्ट्रक्चर भारत में बना. 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सारी जो है वो फॉर्म होती है और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है, इसने अगेन इनडायरेक्टली इंडियंस को काफी फायदा दिया. ऑल्दो पेनिट्रेशन बहुत लिमिटेड था, एक्सेस बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक नया क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियन क्रिएट होता है. ठीक है, सो ये सारा जो है वो बेनिफिट एक तरीके से कॉलोनीज में आया. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी सी दैट सम इंडस्ट्री ऑल्सो स्टार्टेड टू बी सेटअप, क्योंकि अब आपके पास में लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है. रिमेंबर, इंडस्ट्री के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. वी हैव डिस्कस्ड दैट विद इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज. सो इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द colonial rule, these conditions were now there in the colonies, and because the conditions were there, now some industries could be set up. 1853 में सबसे पहले भारत के अंदर में टेक्सटाइल मिल जो है वो सेटअप होती है, एज अर्ली एज 1853. बॉम्बे के अंदर में टेक्सटाइल मिल्स आई, अहमदाबाद में आई, सूरत में आई, कैलकाटा के अंदर में आई. और फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे और भी दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल, स्टील इंडस्ट्री, ये भी भारत में बढ़ने लगी. आपने टाटास का नाम सुना है. सो टाटा जो है ये पहला बड़ा ग्रुप बना भारत के अंदर में. स्टील में उनका काम रहा. जमशेदपुर सारी जो सिटी डेवलप हुई, जमशेदपुर में क्यों हुआ वो, व्हाई नॉट इन बॉम्बे? टेक्सटाइल बॉम्बे में हुआ और जमशेदपुर, ये टाटास का जो सारा स्टील का काम है, पहले उसको टिस्को बोलते थे, टिस्को, बाद में टाटा स्टील. तो वहां पर में क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल, हेवी रॉ मटेरियल है ना, तो जहां पर माइंस हैं वहां पर में उसको लोकेट करना लॉजिकल था. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कोल की जरूरत पड़ती थी. अगेन कोल इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना, उससे बेटर है कि जहां पर में उसका सोर्स है वहीं पर में इंडस्ट्री हो. So that's how steel industry also came up in India. So to a limited extent, industrialization started in colonies because of all of these factors that were now available. Clear? कैपिटल कैसे आया? ये तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ना इंडस्ट्री के लिए. वेरी क्विकली, टाटास की स्टोरी आपको पता है? हाउ डिड टाटास बिकम सच अ बिग ग्रुप? जमशेद जी टाटा जो है, शुरुआत उनकी कहां से हुई? 19th सेंचुरी के अंदर में जब ब्रिटिश रूल फर्मली एस्टैब्लिश हुआ, तो पारसी कम्युनिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी दैट होल हार्टेडली टुक टू वेस्टर्न एजुकेशन. ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन यानी जो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो उन्होंने पढ़ा, सीखा, लैंग्वेज समझी और ब्रिटिश रूल के अंदर में रहते हुए उनकी ही कंडीशंस जो क्रिएट हुई है उसका फायदा उठाते हुए पारसी स्टार्टेड टू बिकम बिग ट्रेडर्स, मर्चेंट्स फर्स्ट. और जमशेद जी टाटा जो है शुरुआत के दौर में he used to trade in ओपियम. 19th सेंचुरी में ओपियम, जो कि हमारे यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड, आज का जो मॉडर्न एरिया है, यहाँ पर में ग्रो किया जाता था. ये ओपियम ट्रेड होता था चाइना के साथ में. तो ये ओपियम एक्सपोर्ट करने से जो है उसकी शुरुआत हुई है उस ग्रुप की. और जैसे जैसे कैपिटल एक्यूमुलेट होता गया, यही साइकिल देखा था हमने यूरोप में भी. पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, मर्चेंट्स ट्रेड करते हैं और उसमें से प्रॉफिट्स कमाते हैं, एंड देन दैट प्रॉफिट इज लेटर इन्वेस्टेड इनटू इंडस्ट्री. ट्रेड से निकल करके इंडस्ट्री में जाते हैं. सेम स्टोरी यू कैन सी टेकिंग प्लेस ओवर हियर एज वेल. सो पहले ट्रेड था टाटास का और फिर बाद में वो इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं. क्लियर? सो इन दिस मैनर इंडस्ट्री डेवलप्स हियर इन इंडिया ऑल्सो.
Okay. Now, industrial revolution and imperialism. Industrial revolution and imperialism. अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा लूजली यूज होते हैं, बट वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. Which two words? Imperialism and colonialism. Okay. Imperialism and colonialism. Imperia, Latin root word, which basically means land or territory. Land or territory. उससे वर्ड बना है imperialism. If you ask the British people, Anuja, resources. Acha, you were trying to answer that question there. Okay, Anuja, I got what you're saying now. So if you ask the British at that point that are you not exploiting the resources of India, then they would say no, we are not exploiting the resources of India. India is not a colony for us. It is our imperial territory. Yes, we have expanded our rule, but we are not exploiting India. We are treating India at par. We are treating India at par with what? With our local white British people. That is what they meant by imperialism. ठीक है? और दूसरी concept क्या है? Colonialism. When the term colonialism is used, so in a technical sense, what does it connote? It connotes exploitation of resources compulsorily. So British will not say that we are colonialist. They'll always say that we are imperialist. हम तो भारत और भारतीय लोगों की बेहतरी के लिए राज कर रहे हैं. See, we have brought railways, we have brought education, we brought law and order, we brought a rule of law, equality before law, everything we have brought. So we are there for their own benefit. Whereas naturally Indian national leadership will say that this is colonial exploitation. You are draining away the wealth from India. जो दादा भाई नवरोजी ने कहा था, Poverty and Un-British Rule in India was his book, 1867. So in that book, he highlights how colonial exploitation is taking place. Did you understand the difference between the two? Imperialism and colonialism. Okay. Now, how did the Industrial Revolution give a boost to imperialism? Now, imperialism has always been there. दुनिया में ये हमेशा से रहा है. Samrat Ashok Maurya was an imperialist. Mauryas were the biggest empire in India till that point. Was he an imperialist? कलिंगा को हराया ही था ना उसने, कई सारे युद्ध किए थे और अपना साम्राज्य विस्तार किया था. So that is imperialism. Romans were imperialist. Okay. Starting from Italy, that empire I had shown you the map. It had spread across 3 continents. Right? So imperialism has always been there. But what changed in the 18th, 19th century is the exploitation of resources for the mother country. Okay, that is what brought about a big change. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इस सारे ट्रेंड को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है. क्यों? बिकॉज नाउ देयर वाज अ बिगर इंसेंटिव. रॉ मटेरियल वाज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन. कॉटन जब हमारे यहाँ अमरावती के आसपास के एरिया से जब जाएगा तभी तो मैनचेस्टर की मिल में कपड़ा बनेगा, है ना. एंड वी वांट स्टेडी सप्लाई ऑफ दैट कॉटन. सो दैट रॉ मटेरियल, देखिए अमेरिका से भी कॉटन आ सकता है, यूएसए से, बट यूएसए इज इंडिपेंडेंट. दे आर गोइंग टू सेल इट एट अ प्राइस दैट दे फील इज राइट, whereas India is part of their empire, so they can always exploit the Indian farmer. Got this idea? So this was a very strong incentive to have control over distant areas, supply of raw materials. Okay. Second, obviously, is access to market, and not just access to market, but complete domination of that market.
You are able to sell your goods in India at very low custom duty, 2% to 8%. अगर आप यही यूएसए के मार्केट में अपना कपड़ा बेचना चाहोगे तो यूएसए जो चाहे वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा. यू कैन स्टॉप यूएसए, इट्स इंडिपेंडेंट कंट्री. सही है ना? सो यू वांट कंट्रोल over these places so that you have full access to their market. Clear everybody? Okay? 2. And not just that, your control also helps mold the local population to your taste. Indians in blood but British in taste. ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था. क्या बोला था? We want to create a generation of Indians who are Indians in blood. खून तो इनका हिंदुस्तानी होगा, बट ब्रिटिश इन टेस्ट. लेकिन इनके जो शौक है, रहना सहना है, ये अंग्रेजों की तरह होगा. ये क्या था? गोल था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का. व्हाई? बिकॉज इफ योर टेस्ट इज ब्रिटिश देन यू विल वांट टू वेयर अ 3-piece सूट. सही है ना? एंड व्हेन यू वेयर अ 3-piece सूट, देखिए किसी को गन पॉइंट पे तो आप नहीं बोल सकते ना, इवन इफ यू हैव द कॉलोनी की गन पॉइंट पे आप बोल नहीं तुमको लेना ये कपड़ा हमारा, यू कैन से दैट. But if you design the education system, the culture in such a manner that people themselves feel, if I want to fit in, if I want to be elite in the society, then I have to wear a 3-piece suit. Okay? So that's why control over markets. Got this idea? Number 2. Number 3, industrial revolution gave the power to take and maintain the control. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक मॉडर्न स्ट्रॉन्ग नेवी ब्रिटेन बना पाया विद ऑल इट्स गन्स, स्ट्रॉन्ग शिप्स. कास्टिंग फोर्जिंग करनी पड़ेगी ना आपको, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही आया है सब कुछ. आप चाहे जितने ब्रेव हो, जैसे द अफ्रीकन पीपल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी ब्रेव, वेरी पेट्रियोटिक, एंड दे डिड फाइट देयर फॉरेन रूलर्स अ लॉट. बट कुड दे सक्सीड? नो. व्हाई? Because of the technological gap that existed because of industrial revolution. एक किताब है, नाम लिख लीजिएगा उसका. Name of the book is The Ghost of Leopold. The Ghost of Leopold. It's a history book, but the title is intriguing. Leopold का भूत. Who was this Leopold? Leopold was the king of Belgium. ठीक है? और लियोपोल्ड ने सेंट्रल अफ्रीका के अंदर में कॉन्गो का जो एरिया है, दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ बेल्जियम. एंड नॉट जस्ट कंट्रोल ऑफ बेल्जियम, इट वाज लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी. भारत तो फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, बट कॉन्गो वाज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द किंग लियोपोल्ड. ठीक है? और लियोपोल्ड ने जो कांड किए हैं कॉन्गो के अंदर में, मतलब आप जब किताबों में पढ़ते हैं इनके बारे में, द वे दे हैव tortured the African people in Congo, you literally get goosebumps in this day and age. I mean, how can fellow human beings do this to other human beings for no rhyme or reason? Several million people were killed in Congo because of this madman, his ambition, his narcissism. Many people, their hands were chopped off. This was a common, punishment that was given for the smallest of things. And you will see that Congo back then had the highest number of amputees because of the punishments that were given. इस किताब में एक आखिरी में एक पोयम है, और उस पोयम की आखिरी लाइन में आपको बता रहा हूं जो आप लिखेंगे. गोस्ट ऑफ लियोपोल्ड इस बुक में एक पोयम है, और इस पोयम की आखिरी लाइन कुछ ऐसी है. इट रीड्स, नो मैटर व्हाट हैपेंस, no matter what happens, we have the Maxim gun. No matter what happens, we have the Maxim gun, and they don't have it. We have the Maxim gun,
and they don't have it. they मतलब कौन? ये पोएम क्या कह रही है? चाहे जो हो जाए, अफ्रीकन लोग चाहे जितना ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर लें, बंदूक तो हमारे पास ही है ना. वी हैव द मैक्सिमम गन एंड दे डोंट हैव इट. ये लोग भाले तलवार लेकर के आएंगे, बंदूक के सामने चलने वाली है क्या? ऑब्वियसली नहीं. नाउ वेयर डिड ऑल ऑफ दिस कम फ्रॉम? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव दैट पावर. मान लीजिए आपने ब्रिटिशर्स को पुश आउट कर भी दिया, तो भी समंदर किसके कंट्रोल में है? Is with the British. They have the navy. Endlessly they can keep on coming, right? So this gave them the power to take in control. Third point. Do you understand this? Fourth, 84% of the then land surface area, world का जितना land है, 84% of that was under Europe's control. Why are we, in a US centric and then back then Eurocentric world? It is because of this change that was brought about. Can you see there was a time when Indian and Chinese civilization were more advanced? हमारी तूती बोलती थी दुनिया में. We never did things like this. When the Europeans got a technological edge in 17th and 18th century, in a matter of decades, they were able to notch up this kind of a control. They were able to exploit that. और वही exploitation का जो wealth generate हुआ है, because of that wealth, you see that even to this date, the global north dominates the world. Global north मतलब ये सारी western developed countries. It is because of this period of industrial revolution. Do you understand this? Gap create हो गया ना, and you are not able to catch up. अब हमारी भी गलतियां बहुत हैं. एक पंजाबी शायर है, उसका शेर है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन. क्या कहते हैं वो? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी. यानी कुछ तो समाज के लोग भी खराब थे और कुछ मुझे भी मरने का शौक था. ठीक है. सो इट्स अ टू वे स्ट्रीट. तो कुछ हद तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका बैकग्राउंड यूरोपियंस तक जाता है, और कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारा करप्शन है, हमारी इनएफिशिएंसी है, हमारा लैक ऑफ विजन है. सो बोथ द थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? यस, नो कांसेप्ट? ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बहुत डिटेल में इसकी चर्चा होगी, which is nationalism and prestige. राष्ट्रवाद. 19th century के अंदर में you will see that the most dominant political idea of that time was nationalism. और वो भी कैसा nationalism था? It was a very virulent, aggressive nationalism. राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम होना एक स्वाभाविक चीज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. But when that crosses the threshold where you want to extol your country, your nation, and disparage others, humiliate others, subjugate others, that is where it becomes problematic. Nationalism इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ये इतना ज्यादा वायरुलेंट हो गया कि यूरोप की हर कंट्री जो है वो आपस में संघर्ष करने लगी, कॉन्फ्लिक्ट करने लगी, to basically prove that they are more superior to others. हिटलर इसका पीक है. ठीक है. हिटलर याचा कळसा आहे, but Hitler is not the originator of it. This had started way before Hitler. Europeans were doing this in the 19th century, it's late 19th century itself. Whether it be British, French, Germans, Italians, everybody was in that race. और ये राष्ट्रवाद अगर आपको दिखाना है कि भाई हम कितने जो है वो मैनली है, पुरुषार्थ तुम्हाला दाखवायचं है, यू वांट टू प्रूव हाउ मैनली यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग योर रेस इज, तो कैसे बताओगे? जैसे कोई पहलवान है जो रोज अखाड़े में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको पहलवान तब तो माना जाएगा ना जब जाकर के किसी को वो धोबी पछाड़ देगा रेसलिंग बाउट में, तभी माना जाएगा. सो इन दिस डे एंड एज आपके नेशनलिज्म का लोहा तभी माना जाता था जब आपके पास में बहुत बड़ा इंपीरियल साम्राज्य आपके पास है. तो क्या करते थे ये यूरोपियंस? बाहर निकल करके जितनी ज्यादा टेरिटरी ये लोग अपने कंट्रोल में ले सकते हैं वो लेने का प्रयास करते हैं. एंड देन इन दैट प्रोसेस दे यूज्ड टू कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. जर्मनी को भी चाहिए, ब्रिटेन को भी चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए. अब क्या होगा? इनके बीच में संघर्ष होगा.
prestige, national prestige was got attached with this. प्रेस्टीज पे जब मुद्दा आ जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, जब हमारी भी प्रेस्टीज पे मुद्दा आता है तो फिर क्या है, पेटून लड़ू मुड़, वी आर गोइंग टू फाइट टिल द फिनिश. This is what will lead to World War I and World War II. So origin of all of these wars is in the idea of nationalism, and nationalism got a boost because of industrial revolution. Clear everyone? Now to foster this, secret military alliances were formed between European powers. क्योंकि मुझे अपना राष्ट्रवाद बढ़ा करना है, मुझे अपना एम्पायर बढ़ा करना है, and everybody is competing. So what do? My enemy's enemy is my friend. ब्रिटेन और फ्रांस जो 1000 साल से दुश्मन थे, वो वर्ल्ड वॉर वन आने से पहले टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ब्रिटेन एंड फ्रांस will shake hands. Why? Because they have a common challenger of Germany. Secret alliances होंगी. जर्मनी जो है वो ऑटोमन टर्की के साथ में दोस्ती करेगा. रशिया और फ्रांस पहले लड़े थे, ये क्रीमियन वॉर मैंने आपको कल बताया था 1856. ब्रिटेन और फ्रांस ने जाके रशिया को हराया था, लेकिन अब 19th सेंचुरी जब खत्म होने आती है तब रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एक साथ हो जाते हैं. सीक्रेट मिलिट्री पैक्ट्स वर फॉर्म्ड, और ये एक दूसरे को बता नहीं रहे कि हमने आपस में क्या डिजाइन बनाया है, हमने आपस में क्या पैक्ट साइन किया है. सो व्हाट हैपेंस इज सस्पिशन स्टार्ट्स टू ग्रो. एवरीबडी विल फील, व्हेन देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, द वर्स्ट इंफॉर्मेशन सीम्स टू बी ट्रूएस्ट. सो देयर वाज अ environment of distrust and suspicion in Europe because of these secret military alliances. और इस सारे डिस्ट्रस्ट की वजह से हर कोई चाहता था कि मैं प्रिपेयर्ड रहूं. वी डोंट नो हु इज अगेंस्ट होम. अगर वॉर हुआ तो कौन मेरे साइड से आएगा, कौन खिलाफ होगा. आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन will help in this arms race also. More and more arms. We as a species, हम लोग जो है झगड़ालू है, मैं आपको बात बता चुका हूँ, अपन भानुखोर आहों. एंड वी हैव बीन फाइटिंग. स्टोन एज में शायद पत्थरों से लड़ते थे, फिर उसके बाद में तलवारें आई, फिर बंदूकें आई, फिर मिसाइल्स तक हम आके पहुंच गए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये जो हमारा भांडखोरपना है, दिस खूंखार नेचर ऑफ आवर स्पीशी, सबसे खूंखार इंसान है. ठीक है, वी जस्ट लाइक टू प्रोफेस दैट वी आर अ मोर सिविलाइज्ड स्पीशी, वी आर वर्स देन एनिमल्स. तो हमारी ये जो खूंखारपन है ना, इसको एम्पलीफाई करने का काम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किया, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन्स अब बना सके. ठीक है, एरिया डोमिनेशन वेपन्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बनी. और ये सब कुछ जो हो रहा था पिछले कई दशकों से, इसका फ्रूशन, नेगेटिव सेंस में फ्रूशन, हमको वर्ल्ड वॉर वन में देखने को मिलता है. ठीक है, वो हो जाता ना, ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आता होम जाऊ दे, अब जो हो सो हो, देखा जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आकर के कल्मिनेट करती हैं इन दिस वर्ल्ड वॉर वन. यू अंडरस्टैंड दिस? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जहां बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, वहां बहुत सारे उसके नेगेटिव भी साइड इफेक्ट्स हैं. क्लियर? यस, नो काइंड सर? Okay, so can you tell me the points? Industrial revolution and imperialism. Raw material. What else? Yes, take and maintain the colonies. Very good. Land surface area. Yes. Very good. Yes. Right. And last, arms race and finally World War One. फ्लो समझ में आ रहा है आप लोगों को? फैक्ट्स सेकेंडरी होता है. ये फ्लो आपने पकड़ लिया ना कि कैसे एक चीज दूसरे को लीड कर रही है, तो उसको जोड़ने वाले फैक्ट्स आप पढ़ लोगे नोट्स में, बुक्स में आप पढ़ लोगे. ठीक है, आपको क्लास में समझना क्या होता है किसी भी सब्जेक्ट का, भाई ये इंटरकनेक्शंस आपको समझना होता है. फिर आप कोई भी किताब पढ़ लो, यू विल फाइंड इट इजी टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम देयर. अंडरस्टूड? चलिए, लेट्स गो अहेड. Okay. Now we come to the last part of this first topic, which is the
consequences of industrial revolution. ठीक है? What were the different consequences? अब मैं ये थोड़ा fast discuss करूंगा. I'll be a little fast over here because by now you've understood everything. All of this is very clear-cut logic, basically. You won't need any explanation as such for it. So what are the economic consequences? England and other industrialized countries became richer. Is it logical? They are mass producing, less cost, less time, better quality. They have markets. They're going to sell it. So they'll become rich. One. Second, it gave boost to imperialism. We saw all of that in detail. Why imperialism became more strong? Because of industrial revolution. Point number two. Point number three, it created jobs. Did it create jobs? Yes. Workers, supervisors, accountants, right? You need lawyers. Many such jobs got created because of industrial revolution. Banking and financial institutions increased. More the industry, more you need these institutions. So modern banking, finance industry, insurance है ये सब कुछ आया. Concentration of wealth started. Concentration of wealth. Why? Because the capitalist is going to go on accumulating wealth. More and more profit accumulation. Whereas the working class is going to become poorer and poorer. So that gap of haves and have-nots is going to enhance. COVID times में दोस्तों, see it's interesting. During COVID times, we had a big economic crisis also because nothing was happening, right? But even in that time, the most richest people on earth, if you see the wealth of the richest people on earth, not just in USA and other places, in India also, these people became more rich. So the world has come to a standstill. Economy is not functioning, but the rich are getting more rich and the poor are getting poorer. This is the nature of capitalism. Do you understand this? 1%, top 1% rich Indians own, लिख लीजिए इसको, according to Oxfam report, according to Oxfam report, 1% top 1% rich Indians own 40% of India's wealth. Top 1% rich Indians own 40% of India's wealth. Okay? And top 10% rich Indians own 67%. 67% of India's wealth. Can you see the gap between haves and have-nots in the wealth? This is because of industrial revolution. The process that is unleashed, it always makes the rich more richer. So concentration of wealth हुआ. Then development of agriculture. A lot of this technology that was coming from industry, like for example, chemical industry developed. Chemical industry से हमने क्या बनाया? Fertilizers, pesticides, है ना? Tools and implements like tractors. So all of this naturally had a beneficial impact on agriculture. We'll see more food production will take place. British times में इसको याद रखिएगा. There were 12 major and 40 minor famines in India. 12 major and 40 minor famines in India. After that, have we had a famine? No. Okay. Famine क्या होता है? What is famine? So what is drought? Are they the same or different? Drought and famine, same or different? Different है ना? क्या difference है?
हाँ, भीड़ में नहीं, भीड़ का क्या कंसर्न नहीं हो? नहीं, फेमाइन जो है वो ह्यूमन पॉलिसी की वजह से होता है, ठीक है। ड्राउट जो है वो नेचुरल, ठीक है। जब ह्यूमन डिसीजन, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूं, चाइना ने जो है वो माओ के जमाने में उन्होंने बहुत सारे जो है वो स्पैरोज को मारा था, ठीक है। स्पैरो होती है ना चिड़िया, क्यों? क्योंकि ये दाना चुगती थी, ठीक है। तो उन्होंने स्पैरोज को मारा और उसकी वजह से पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। एंड क्योंकि हर प्राणी का एक अपना रोल होता है सिस्टम के अंदर, अगर आप उसको हटा देंगे बड़े स्केल के ऊपर में तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन के ऊपर में इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। एंड लॉट ऑफ पीपल डाइड इन चाइना ड्यूरिंग अर्ली इयर्स ऑफ माओ एज द रूलर। दैट इज फेमाइन। ह्यूमन पॉलिसी की वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ है। यू अंडरस्टैंड दिस? इट वाज नॉट नेचुरल। वैसे ही 1943 में, यू वोंट बिलीव, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल डाइड। आप इमेजिन कीजिए किसी प्रोविंस का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो भूख से मर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा जो वहां का फूड प्रोडक्शन था उसको डाइवर्ट कर दिया था फॉर वर्ल्ड वॉर 2। तो अनाज ही नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन बंगाल, बंगाल मतलब आज का हमारा वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, ठीक है, सम अदर पार्ट्स ऑल्सो, असम का भी कुछ पार्ट उसमें ही था। तो ये यहाँ पर में इतने बड़े पैमाने पे लोग मरे। व्हाट इज दैट? फेमाइन। That was the biggest famine in the 20th century. By God's grace, after independence, of course, we never had any such, harsh situation. Got this idea? So agriculture improved. Urbanization took place. Industry जब भी आएगी तो urbanization बढ़ेगा. Production went up and prices came down. Common sense? ठीक है? All right. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Economic consequences हो गए. Now political consequences. What were the political consequences? Capitalist lobbies developed. ये टर्म सुना है आपने? लॉबी, ये लॉबिंग। व्हाट्स अ लॉबी? लॉबी इज अ प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप दैट एक्ट्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो ग्रुप काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉबी। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव कैपिटलिस्ट लॉबीज इन द फॉर्म ऑफ एसोचैम, फिक्की इन इंडिया। ये क्या है? एसोसिएशंस हैं ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो ये क्या करते हैं? ये सरकार के साथ में बातचीत करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में डिस्कस करेंगे, टैक्स की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग। अमेरिका में तो ये बहुत ओपनली होता है। यूएस के अंदर में डिफरेंट लॉबीज, दे सपोर्ट दी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स और ओपन चेक से पेमेंट होगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन डोनाल्ड ट्रंप $1 crore इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो होल ऑफ अमेरिका नोज हु हैज गिवन डोनाल्ड ट्रंप व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी। इट हैपेंस वेरी ट्रांसपेरेंटली। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारी लॉबिंग जो है वो थोड़ी शेडी तरीके से चलती है। वी डोंट नो हु इज हैविंग व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, हाउ मनी इज चेंजिंग हैंड्स। अमेरिका ने इसको लेजिटिमाइज किया हुआ है। तो दैट इज लॉबिंग, कैपिटलिस्ट लॉबीज बनी। और आप देखेंगे हमेशा लॉज, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर करती हैं इंडस्ट्रीज को, ठीक है। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स, दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस। ये वर्ड कैसे बना था, मैं थोड़ा सा इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ, आई थिंक यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। एक यूएस प्रेसिडेंट थे, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड टाइम्स। यूएस प्रेसिडेंट जो है वॉशिंगटन डीसी में है, आपको पता है व्हाइट हाउस इज दी ऑफिशियल ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, रेसिडेंस भी है। तो शाम के वक्त में ये अपना काम वाम खत्म करने के बाद में जस्ट टू हैव अ मी टाइम, रिलैक्स करने के लिए, ही यूज्ड टू गो टू अ 5 स्टार होटल वेरी क्लोज बाय। और वहां पर मैं उसकी लॉबी में बैठ करके ही यूज्ड टू स्मोक हिज सिगार जस्ट टू अनवाइंड फॉर द डे। बैक देन इट वाजंट अ बिग डील, इतना कोई तामझाम सिक्योरिटी वो सब कुछ नहीं होता था। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग अगो।
तो यूएस के बिजनेस ग्रुप्स को पता चला कि प्रेसिडेंट की ये हैबिट है कि वो शाम के वक्त में यहाँ पर में आकर के सिगार स्मोक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो उस होटल के अंदर में रूम्स बुक करके वहीं रहते थे और शाम के वक्त में दे यूज्ड टू लॉइटर अराउंड द लॉबी होपिंग दैट द प्रेसिडेंट विल कम। एंड व्हेन द प्रेसिडेंट यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू meet and greet, and then try to convince him about what they wanted, ठीक है, ताकि उसकी पॉलिसीज जो है वो उनके फेवर में बन सके। और इससे जो है वो वर्ड बना है लॉबिंग, बिकॉज दे वर मीटिंग इन दी लॉबी ऑफ दैट होटल। इंसिडेंटली आई वाज सिलेक्टेड बाय यूएस स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट यूएस में एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है विच इज देयर फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये हर साल बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है where they invite people from other countries to their country. इसको पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं। तो एक ऐसी एक प्रोग्राम के लिए मेरे फाइनल ईयर में कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आई वाज सेलेक्ट, देयर वर 2 फ्रॉम इंडिया हु वर सिलेक्टेड। आई वाज लकी टू बी वन ऑफ देम और आई वाज टेकन टू यूएसए। और वहां पर मैं फिर इस प्रोग्राम के अंदर में यू आर शोन व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग, कैपिटल उनका जो पार्लियामेंट है वो, देन गवर्नर ऑफिसेस एंड मेनी सच प्लेसेस। So I was lucky to, be to वो hotel अभी भी है. I didn't go inside, but I was told that this is the place where the businessman used to come and meet that president. और इसकी लॉबी से ही वो वर्ड लॉबिंग बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट लॉबी समझ में ना, ये लॉबी की वजह से क्या होता था, लॉज वर पास दैट वर इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट, दैट्स ऑब्वियस। इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टेड टू एंटर द पार्लियामेंट। पॉलिटिसाइजेशन, पहले तो ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और फिर बाद में जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा, सो दे डायरेक्टली एंटर्ड इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। वी हैव आल्सो हैड सो मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट इन आवर कंट्री हु हैव बीन मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इवन विजय माल्या, हु इज टुडे अ ऑफेंडर एंड फ्यूजिटिव, विजय माल्या वाज अ मेंबर ऑफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी पॉलिटिक्स में एंटर हुए। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 was passed। अब ये क्या है रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832? ब्रिटेन के इतिहास में हमने एक बड़ा इवेंट देखा था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से 1688 में। आपको याद होगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ब्रिटेन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, मैं आपको बताया था, ये आ गई। उसके साथ साथ में जो सुपर एलीट थे इनको पार्लियामेंट में एंट्री मिल गई, रिच पीपल। इससे पहले कौन होते थे? ओनली द फ्यूडल काइंड ऑफ एलिमेंट्स वर पार्ट ऑफ इट। जो ये नए मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं थे उस वक्त में, जो नए मर्चेंट्स थे उनके पास में एंट्री नहीं थी। बट 1688 के रेवोल्यूशन की वजह से दिस न्यू रिच एलीट ऑल्सो गॉट एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन ये लिमिटेड था टू अ वेरी स्मॉल मिनिस्क्यूल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। वोट भी कर सकते थे वो लोग और पार्लियामेंट में भी जा सकते थे, others could not, okay। 19th century, as I've told you, is the century of liberalism, व्यक्ति स्वातंत्र्य, individual rights and freedoms। So the political demand was rising to give more and more representation in the parliament। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ करके जाने का अधिकार होना चाहिए। सो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 की वजह से ये जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन था, जो पहले सिर्फ 6% के आसपास हुआ करता था, who could vote and participate in the election, now that was enhanced to 20% of the population, okay। More deepening of democracy based on, among other things, some economic criteria. More people were given right to vote and participate in election. So this jump 6% to 20% happened because of whom? It happened because of industrialists, because of industrial revolution। Do you understand this? अब 20% में यहाँ पर में हरिया नहीं है जो गांव से आया था और यहाँ पर में लेबर बना हुआ था, उसको अधिकार नहीं है। ये किसको है? ये छोटा मोटा फैक्ट्री का जो मालिक है, जो टैक्स भर रहा है, अब उसको अधिकार मिला। पहले इट वाज ओनली रिच, वेरी रिच मर्चेंट्स, और उसके पहले इट वाज ओनली फ्यूडल लॉर्ड्स, जन्माच्या आधारावरती, बर्थ बेस्ड
that participation was there. Then subsequently super rich merchants, and now the new industrial class got it. ठीक है, ये 19th सेंचुरी में ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस चलती रहेगी टिल द पॉइंट वेयर एवरीबडी गॉट अ राइट टू वोट. डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होती रहेगी ब्रिटेन में. भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है, फर्स्ट कंट्री, जिसने एट वन स्ट्रोक हर किसी को वोटिंग का अधिकार दिया. यूरोपियन कंट्रीज में जहां भी आया है, इट टुक स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, एंड विमेन वर गिवन टुवर्ड्स द एंड. भारत में महिला हो पुरुष हो, irrespective of your economic standing, everybody got a right to. You understand this? ठीक है? Yes, absolutely. अपना हाँ, Article 326. Tensions with other countries. I've told you this, how the rivalry was going on between European countries because of Industrial Revolution. So this rivalry was rising. Because of this rivalry, one of the consequence was protectionism that Donald Trump is now doing. Protectionism means what? Protectionism means every country tries to protect its trade using tariff. उस वक्त तो tariff ही था, and then later stage में you also have non-tariff barriers. That is protectionism. समझे आप? टैरिफ मतलब क्या? नेदरलैंड से अगर कोई गुड्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर में, हम उस पर 200% का ड्यूटी लगाएं. Why? Because their product should become expensive in our market. Our local industry should be protected. So ये आपस में भी ये लोग इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स कंट्रीज लगाते हैं जिसकी वजह से गुड्स या तो आ नहीं पाएंगे, या अगर आए भी तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे. These are नॉन टैरिफ बैरियर्स. जैसे यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं फॉर इंपोर्ट्स, दे आर वेरी हाई, और हमारा जो प्रोडक्शन है, इट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स. अगर हम कर भी पाए तो कॉस्ट बहुत एस्केलेट हो जाती है. ठीक है, व्हाट आर दीज? दीज आर नॉन टैरिफ बैरियर्स. यू अंडरस्टैंड दिस? एक सिर्फ मिसाल देता हूं आपको. एक कंसेप्ट है, न्यूज में आप पढ़ेंगे इसलिए बता रहा हूं. ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट. ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट. ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या? ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट मतलब देखिए, जैसे भारत के बहुत सारे हमारे यहाँ पर में पोल्ट्री ओनर्स हैं, और भारत से ये एग्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू यूरोपियन यूनियन. अब इमेजिन कीजिए, कई लाखों करोड़ों एग्स भारत से जा रहे हैं, पूरे इंडिया से यूरोपियन यूनियन में बिक रहे हैं. अब मान के चलिए कि किसी एक एग के ट्रे में कोई प्रॉब्लम निकल जाता है, कुछ क्वालिटी उसकी खराब निकली, कुछ इन्फेक्टेड निकला, वगैरह वगैरह. ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट ये कहता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रे है एग का, वो एग कौन से किसान के किस पोल्ट्री से कब निकला हुआ है, ये सब कुछ हमको इमीडिएटली पता चलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसिंग. यू अंडरस्टैंड दिस? जैसे हमारे यहाँ वेंकटेश करके पुणे में, वी हैव अ वेरी फेमस पोल्ट्री. वो अपना भी उनका प्रोडक्शन बहुत है, और वो दूसरे फार्मर से भी चीजें करवाते हैं. Now this Venkateshwara hatcheries, it is exporting eggs to European Union. Now it has several thousand farmers connected with it, जिनसे eggs लिए जा रहे हैं. अब वो किसी एक ट्रे में अगर प्रॉब्लम आ गया, तो यूरोपियन यूनियन का लॉ कहता है कि वी मस्ट बी एबल टू गो बैक एंड ट्रेस कि पुणे जिले के इंदापुर तालुके के अंदर में वाड़ी नाम का गांव है, वहां पर में शिंदे नाम का जो है वो शेतकरी है, और उसके पोल्ट्री के अंदर में ये एग के अंदर प्रॉब्लम निकला है. That is the level to which they want precision. अब ये possible हो पाता है कि हमेशा? It's very difficult. Okay? So what is this? Non-tariff barrier. अगर कर भी ले हम लोग, इतनी सिस्टम बना भी ले कि उस किसान तक हम पहुंच जाए, तो वो सारी चीजों की कॉस्ट बहुत होती है. You understand this now? So ये क्या कहलाता है? प्रोटेक्शनिज्म. डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ना अभी, टैरिफ्स उसने इनहेंस कर दिए. जिन जिन कंट्रीज ने टैरिफ यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाया है, और एक्चुअली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इन हिज प्लेस, ही इज अ बुल इन द चाइना शॉप कहते हैं ना, वैसा कैरेक्टर है वो. बट
उसके कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रेस, दूसरी कंट्रीज उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर में 100%, 150%, 200% टैरिफ लगा रही है, और यूएसए से एक्सपेक्टेड है कि वो सिर्फ 5, 10, 15% लगाए। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि अब वो दौर नहीं रहा कि हम जो है वो ऐसे ही आपको वो करें, वी ऑल्सो हैव टू एनहेंस। तुम 200% लगा रहे हो तो मैं 70% लगा रहा हूँ, फिर भी मैं कम ही रख रहा हूँ उससे, बट आई ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट माई इंडस्ट्री। दैट इज हिज आइडिया, द वे ही पुट्स इट अक्रॉस, और उसकी सारी पर्सनैलिटी की वजह से पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, बट देयर इज लॉजिक इन व्हाट ही वांट्स टू से, इन माय व्यू। गॉट इट? क्लियर? ओके। इसके आगे की 2-3 पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। राइवलरी, आर्म्स रेस, वर्ल्ड वॉर वन, वी नो दैट। लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ आपको बता दूं, लेबर लॉज। लेबर का चूंकि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, I've told you 16 hours was a common working day and 7 days a week, मतलब 365 डेज आप काम कर रहे हैं और 16 घंटे आप काम कर रहे हैं, वो भी ऐसी जगह पर में जहां पर बहुत रिस्क है, मशीन्स है, हीट है, वेंटिलेशन नहीं है, कोई आपके पास सेफ्टी गियर नहीं है, ऐसे हालात में आप काम कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट मेन बट women एंड स्मॉल चिल्ड्रन, children as young as 14 and 12 were made to work in the industry। बल्कि बच्चों की डिमांड ज्यादा होती थी, पता है क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन वर इजी टू कंट्रोल, डांट डपट मार के काम करवाया जा सकता है, एंड ऑल्सो देयर फिंगर्स आर स्मॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन डू स्मॉलर मशीन का वर्क, एंड दे कैन ऑल्सो बी सेंट इनसाइड। तो मशीन के अंदर पार्ट्स जो है वो करना है, तो बच्चों की साइज छोटी होती है, दे कैन बी सेंट इनसाइड द मशीन्स। सो चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड ऑन अ बिग स्केल। फिर ये सबके बाद में इनके पास ना सैलरी अच्छी होती थी, ना कोई बोनस मिलता था, रहने के लिए घर नहीं, स्लम्स में रहते थे, फैमिली लाइफ ब्रेक डाउन हो रही थी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने फिर लेबर लॉज पास करना स्टार्ट किया। भारत में भी 1881 में पहला फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ, ठीक है। 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट भारत के अंदर में पास हुआ है, और वहां से लेबर लॉज की शुरुआत भारत में भी हुई। इसके जस्ट कुछ वक्त पहले लेबर लॉ जो है वो ब्रिटेन के अंदर में पास किए गए थे, जस्ट फ्यू इयर्स बिफोर दिस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो पहली बार हम देखते हैं कि लेबर का हित, कामगार का हित, श्रमिक का हित जो है, इसको ध्यान में रखते हुए देयर विल बी सम लॉज दैट विल बी पास्ड, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट मेजर पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आफ्टर दिस, लास्ट डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक, socio-cultural issues. This discussion is a little crucial, so a few of these points, please be very attentive and try to understand, appreciate what we are talking about. Industrial revolution की वजह से समाज में there were two major classes that were born. Two major classes come about. What are these two major classes? What is class, by the way? Class is segregation of society, stratification of society on the basis of economic criteria, ठीक है। भारत में कास्ट सिस्टम रही है हमेशा से, जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था क्या है? ऑन सोशल एस्क्रिप्टिव बेसिस, बर्थ के बेसिस पर सोसाइटी इज stratified. Now it can so happen that you have a so-called upper caste person who's very poor. Happens, right? And you can have a so-called lower caste person who will be otherwise economically good. Exceptions होंगे लेकिन होंगे, ठीक है ना। तो वहां पर there is no economic condition. Here social aspects do not matter. Society stratified on the basis of economic criteria is called as class, individually classes. So now two classes emerge, which is capitalist class and the labor class. कौन सी दो क्लासेस हैं? कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास, ठीक है। समाज में अब ये दो वर्ग बन गए। दिस लेबर क्लास रियलाइज्ड
What did it realize? That see, irrespective of my any other identity, I am always exploited for being a member of this class. Shramik या labor could be English, Welsh, he could be Scottish, he could be a Dutchman. But irrespective of any of these identities, he was being exploited in the industry. He could be a Christian, a Jew, or follower of some other religion. Yet he was being exploited in the factory, right? He could be a Protestant, he could be a Catholic, he could be a Calvinist, he could be a Huguenot, he could have any sect-based identity, but yet he was being exploited. So these people realized that our real identity today is not based on religion, language, culture, sect, etc. Our actual identity that matters is we are workers, we are labor. Got this? So ये जो realization होता है that we are all part of that same shared experience, this creates what is called as class consciousness. I want you to understand these points. Mind में आपकी होनी चाहिए clearly. Industrial revolution created, number one, two classes, capitalist class and labor class. One. Number two, the exploitation of labor led to creation of class consciousness. हम सब एक हैं, ये भावना, class consciousness. ठीक. If we are one and we are being exploited, what should we do? We should come together and try to fight against this, fight for our rights. Third logical thing out of it, this creates trade unionism. What does it create? Trade unionism, where they come together and start to demand more rights. Sunday chutti chahiye, working hours regulated chahiye, we want more safety equipments, so on and so forth. All these kind of demands were being taken up by the worker organizations called as trade unions. While all of this is happening, the exploitation is still continuing. So some intellectuals who are looking at this from outside, who are seeing that, see, this is inhumane, they come up with new ideologies to solve this problem. Band-aid से काम नहीं चलेगा. Just giving a holiday on Sunday and reducing working hours from 18 to 14 is not going to solve the problem of workers. The problem is in the existing capitalist system. As long as this capitalist system is there, exploitation is going to continue. So what should be the alternative? We should come up with new ideologies which will change this system of exploitation and bring about a more humane system. So socialism, Samajwad, and communism, Samyavad, socialism and communism, these were born as alternatives to what? As alternatives to the exploitative capitalist system. बात समझ में आई आप लोग की? Can you tell me the sequence? First in that is society got divided. You all understand why it gets divided? The division leads to no, before that, yes, two classes she said. After that, what? Consciousness. This is a very important point. Class consciousness. ये keyword आपको hit करना ही है. Class consciousness. Class consciousness needs to see, if you are like students who are studying in the class and you are facing, say, some common issue. Okay? So first you have to have that feeling that, see, we are all students, we all are facing this common problem, and therefore we need to take it up with, say, the administration, that this is what we want resolved. So that is that consciousness that we all are students, we are facing the same problem. That has to come first. When that comes first, then you have a representative organization. You will appoint somebody that these three people will go and talk to the administration. Okay? That is trade unionism. Then
ये तो अपनी जगह बैंडेड है. Small things can be addressed to trade unions, but bigger things can't be addressed to trade unions. For that, what do you need? You need a new ideology. ठीक है, सोच बदलो सितारे बदलेंगे. I told you that couplet yesterday. So you need a new approach altogether. So socialism and communism were born. You understand this? What did they say? Separate topic is going to come up. We'll see comparatively capitalism, socialism, communism. Don't worry. But right now, understand this. Okay? Okay. Working condition was very bad. I told you how many hours, what kind of life these people lived. Disease, malnutrition, crime, all of this was common where the workers lived. Generally, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते थे. Nobody to regulate how they are being exploited. No institution, no inspectors, nothing. Absolutely. Family as a unit completely broke down because workers, they are working 16, 18 hours. Will they have the time to actually spend with each other? No. So family breaks down. Addictions start to increase, immorality comes in. So overall, the society was heading for a big collapse during industrial revolution times. Do you understand this? Okay. इसीलिए UPSC had asked you the question, what were the conditions in England at that time? You remember that question? Did you remember that question I showed you on, on one of the first slides? UPSC had asked you, what were the conditions of workers in England during Industrial Revolution? How does that compare to India at present? Okay? That was the question that was asked. Now, can you see what were the conditions of workers? Okay? Can we compare that with what is there in India right now? Now, that is never taught in the topic as such. And before UPSC asked that question, nobody would have perhaps imagined that such a comparison can be asked. So sometimes, theoretically, you'll know one part of it, and the other part, you will have to apply your mind. Do we have such bad condition in India right now? No, we have much better condition. We have labor laws, we have working conditions regulated, we have inspections. At least organized sector mein, things are much better. We can say that in unorganized sector, relatively things are worse than organized sector, but definitely not as bad as it was during Industrial Revolution. Clear? Okay, so this concludes our discussion on the topic of Industrial Revolution. Okay, after this, we are going to see the next topic, which is American Revolution. But before we go ahead, can we write one answer on Industrial Revolution? Can you try writing it? Okay. Take a question. Bring out the relationship between, एक काम कीजिए, डिस्कस कर दीजिए उसको, सिंपल. Discuss the relationship between Industrial Revolution and imperialism, European imperialism. Make it European imperialism. Have you understood this dimension of the topic? Can you try to write a, just say 100 words ka answer? Very brief, 100 words. Can you try? Okay. Okay. Just try it out right away. 5 minutes for you to, 7 minutes to write this answer.
Even if you're not able to write full answer, just try to at least write the main points. These are the points that you will try to touch. Okay, you can continue this exercise at home as assignment. What I want you to do now is just tell me the main points. What will you like to include over here? We're talking about imperialism and industrial revolution. What are the points that we can talk about?
Very good. Okay. Raw material, markets, right? Yes. Okay. ओके. लेबर लॉज नहीं कहेंगे यहाँ पर मैं. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. राइवल पहले तो नेशनल प्रेस्टीज, राइवलरी, सीक्रेट मिलिट्री अलायंस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है ना. तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. वी कैन कनेक्ट दोस. ओके. दिस इज एन असाइनमेंट. ओके. आई वांट एवरीबडी टू राइट एन आंसर. इट्स ओके इवन इफ यू डोंट कंप्लीट द फुल वर्ड लिमिट. जस्ट ट्राई टू इंक्लूड द मेन पॉइंट्स. ठीक है. कोशिश करना है सभी ने. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट नोबडी राइट्स अ परफेक्ट आंसर इन द वेरी फर्स्ट सेकंड टाइम. It's a process, and in fact both of you who had written the answer, you had done a pretty good job given that it was your first answer. Okay, so that's very encouraging. It shows that you have analytical mind, you have good language skills also, both of you. Isko continue kijiye. Okay, and after the class of course I'm available. If you want me to read through your answer at length, I'll be most happy to do that. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखने देखने के लिए हम आगे चल रहे हैं. There's this very nice quote by Mahatma Gandhi. Personally, I like this quote a lot. A small body of determined spirits, fired by an unquenchable faith in their mission, can alter the course of history. ये लिख लीजिए इस quote को आप. A small body of fired spirits, determined spirits, fired by an unquenchable faith, fired by an unquenchable faith in their mission, fired by an unquenchable faith in their mission, can alter the course of history. ये महात्मा गांधी ने कहा था. And I personally feel that this actually fits the American Revolution perfectly. The 13 colonies that Britain had established on the other side of Atlantic in North America had lived very happily with motherland Britain. They used to take pride in the fact that they were ruled by the most powerful empire in the world, Britain. But some developments take place around 1763 and this relationship goes downhill. So much so that these earlier proud subjects of King George III, they decide to rebel against their motherland, against their king, and completely sever the ties with England. And not only that, they also decide that they will bring about a new type of polity that the world had practically not seen before. The ideas were there. The American Revolution and the subsequent state that they created was based on the ideas of enlightenment. But it is one thing to have ideas and quite another to practically implement and demonstrate it. The greater achievement of American Revolution, I mean, it is one big achievement to defeat Britain and declare your independence. That's remarkable in itself. But from the world perspective, what is more relevant is the kind of polity they created and successfully have been running till this date. And that is why it is a very seminal event in the history of the world. We are going to now try to understand the context, the course, and the consequences of the American Revolution. Okay? Chaliye, let's start our discussion. The American Revolution is based on a very famous document called as the Declaration of Independence that was adopted on the 4th of July 1776. This Declaration of Independence is like a submission that the American people were making before the rest of the world. पूरी दुनिया के सामने वो अपनी बात को डंके की चोट पे रख रहे थे.
Before this revolution, it had never happened that colonies had taken such an extreme step. And whenever something new happens, it is always seen as, wrong or illegal and whatnot. Therefore, it was likely that the world would have seen the American Revolution as an illegal act against motherland. So the American people kind of felt compelled that they must be able to put their position before the whole world, before posterity, before human history. So this document makes a case. It gives the argument why the American people are doing what they are doing. It's a very beautiful document that has helped, that has shaped human history, political history ever since. And in this document, there is a very famous quote which captures the real spirit of this revolution. क्यों Americans ये कर रहे हैं? What is their real motivation behind it? Is very beautifully addressed in this particular quote. What does the quote say? It reads like this: all men are created equal. I want you to by heart this quote. Okay? All men are created equal. That they are endowed by their creator. They are endowed by their creator with certain inalienable rights. That they are endowed by their creator with certain inalienable rights. And among these are life, 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 liberty, life, liberty, and pursuit of happiness. Life, liberty, and pursuit of happiness. दोस्तों, इस कोट के रेवोल्यूशनरी जील को समझने के लिए, to understand the real revolutionary zeal of this quote, we have to locate it in the context in which it was set. Okay? We are talking about a period where in the rest of the world you had concept of absolute monarchy. सही है? Yes, Britain had constitutional monarchy, but that was more of an exception. The rest everywhere you had different forms of absolute monarchy. So all power was in the hands of whom? The king. There was no institution to protect the common man, no rule of law. Below this absolute monarchy, you had a privileged aristocracy and clergy. Means those people who were the rich elite, the feudal elite of the society, by birth, just because they were born in a certain family, they were by birth and for lifetime given some privileges. The same was the case with the religious elite, the clergy. Whereas the huge majority of people, the common masses lived a wretched life. हिंदी मराठी में जिसको हम बोलते हैं ना कि जानवरों की सी जिंदगी ये कॉमन मासेस की थी. Their life, their honor, their respect, dignity, everything could be trampled upon by the monarch or by these elites. So it was that kind of a dark period. In such an age, the American people stand up and they say that this system we are not going to tolerate anymore. And instead, we believe in the idea that, and now read this, all men are created equal. ये inequality नहीं चलेगी. All men are created equal. And they are endowed by whom? By their creator. Not any constitution.
not any parliament, not any religious authority, right? Directly the creator has given some inalienable rights which you cannot take away. पहले राजा ने डिसाइड कर दिया इसको फांसी दे दो, दे दी फांसी. रूसो को जेल में डाल दिया. There was this jail in Paris called as the Bastille, very infamous jail. So political thinkers used to be put in that jail and many died over there. Nobody would question, nobody would ask. अभी आपने सीरिया में जो कुछ हुआ है देखा है recent times में? In Syria there was a prison called as Sednaya near the capital. Several thousand people have, it is said, were sent to this prison and nothing was ever heard about them. The worst forms of torture were committed on these people. And the ruler, Bashar al-Assad, there was no authority that could question him. Luckily for the people, that dictator was toppled. That's why all of this came out. Otherwise, and it was going on for decades. For decades, this exploitation was going on. आज भी ऐसी dictatorships हैं. And this was the standard, this was the norm during that time when the American Revolution is taking place. So the American people say that you can't do this to people, fellow human beings. They're not animals. They have certain rights like life, liberty. किसी की भी जिंदगी ले लोगे तुम. Nobody questions you. No. You'll put somebody in jail. No, liberty है. And he has the right for pursuit of happiness. He must be able to live his life to the fullest. हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी and caste system dictated what work you will do. If you did not follow that work, then you were ostracized, you were punished. होता था कि नहीं होता था ये? American Revolution कह रहा है every man has the right of pursuit to happiness. Means what? He has the right to live his life to the fullest the way he or she wants it. Okay? This is the revolutionary idea. You get this? Not only do they declare it, they also go about to establish a state which will ensure it. And that's why American Revolution is important. Got this point now? Do you understand it? Okay. Okay, now let us first try to define what is the American Revolution. We always try to define the key concept first. Like we took some time to define what is Industrial Revolution. So on similar lines, when we say that American Revolution is a significant event, then what is meant by the American Revolution? American Revolution is the war of liberation that was fought by 13 colonies of North America, Britain's colonies, through which they severed, tod diya, kaat diya, severed their ties with motherland Britain. And this gave birth to the powerful nation of United States of America. So can you tell me what is American Revolution to begin with? It is a war of liberation fought by, can I hear louder? आप भी थोड़ी, आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, 13 colonies of North America through which they severed ties with Britain and created a new independent country called as United States of America. This revolution and the state that they created was based on the thoughts of Enlightenment. Enlightenment याद है आपको? I had told you यूरोप के अंदर में देखिए सीक्वेंस था. Renaissance, Europeans reconnected with their past, rebirth कहते हैं इसको. इसमें से क्या हुआ? Reason, विवेक, rationality enhance हुई. Out of that came scientific revolution. ठीक है? Scientific revolution में क्या हुआ? Scientists gave universal laws. Newton याद रखें, the most important scientist was Newton. Newton gave 3 universal laws of motion.
सो इंस्पायर्ड बाय दिस साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो कि आप ये कह सकते हैं कि 15th 16th सेंचुरी का प्रोडक्ट है, लेटर ऑन experts of other field, political scientists, they felt that if our fellow, you know, intellectuals like scientists can contribute so massively, we should also make some contribution in our field. तो हम क्या करेंगे? We will also give some universal laws, concepts, constructs, ideas which will lead to betterment of mankind. And this gave birth to a period or movement that is called as Enlightenment. 17th 18th century is the period of Enlightenment. Enlightenment में क्या आया? न्यू पॉलिटिकल आइडियाज आए. ठीक है. साइंस ने उस वक्त के सुपरस्टिशन पर हमला किया, उस वक्त के उस अंधकार पे हमला किया. एनलाइटनमेंट क्या करता है? एनलाइटनमेंट उस वक्त के पॉलिटिकल अंधकार पे हमला करता है. व्हाट वाज द पॉलिटिकल डार्कनेस एट दैट टाइम? एब्सोल्यूट मोनार्की, प्रिविलेज्ड क्लासेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल. एनलाइटनमेंट उस पे हमला करता है. और एनलाइटनमेंट क्या देता है? नए आइडियाज देता है. और प्राइमरीली ये सभी आइडियाज को अगर हम एनकैप्सुलेट करें सिंगल इसमें, तो क्या है? इट्स अबाउट इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स, लिबरलिज्म बेसिकली. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. सो इससे इंस्पायर्ड थे अमेरिकन पीपल. गॉट दिस? ठीक है. सो sovereignty of people. Sovereignty is not with the crown. मेरा वचन ही है शासन, नहीं चलेगा. Sovereignty should lie with people. Separation of church and state, individual liberty, ये सारे क्या हैं? These are all ideas that are coming out of enlightenment, so that human life becomes better. किसी एक के हाथ पे सारी पावर हो, इससे बेटर है ना कि पावर जो है वो सभी के पास शेयर होनी चाहिए. चर्च और स्टेट अगर फ्यूज होगा, then you will have exploitation in the name of religion. So we need to separate church and state, secularism. Okay? Every person must have fullest right to express himself, right? Individual rights and freedoms. तो ये सारे ideas कहाँ से आए? Enlightenment. I hope you will never forget the sequence now. Clear everyone? Renaissance, scientific revolution, enlightenment. ठीक है. इसके बीच में एक और स्टेप आता है, लेकिन यहां since it was not that relevant, so I have not mentioned it. एक और ध्यान में रखिएगा, रेनेसां के साथ में आता है रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन क्या है? रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन इज अ पीरियड वेयर जो रोमन कैथोलिक चर्च की एक्सेसेस थी उसके खिलाफ में आवाज उठी. पीपल लाइक मार्टिन लूथर, कैल्विन, many other such people, they spoke out against the exploitation of masses in the name of religion. रिलीजन के नाम पर जो है यूरोप के अंदर में चर्च से एसोसिएटेड लोगों ने बहुत अत्याचार किए. I'll just give you one or two examples so that कभी आपको एग्जाम्पल देना पड़े तो आपके काम आएगा. एक एग्जाम्पल जो आप उसमें दे सकते हैं वो है लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्यूशन. सॉरी, मैंने गलत नहीं किया उसको. लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस, आई एम सॉरी. क्या था ये लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस का कंसेप्ट? चर्च इतना करप्ट हो चुका था मॉरली कि वो इन लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस को लोगों को बेच रहा था. मान लीजिए यू हैव डन सम, जिसको हम कहेंगे पाप आपने किया है, आपने कोई क्राइम किया है, कुछ गलत चीज आपने की है, एंड नाउ नेचुरली यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एज पर रिलीजियस बिलीफ्स एंड फिलोसफी. बट इफ यू वांट टू avoid that punishment from God, then what you need to do is you have to buy that letter of indulgence from the church. So you pay that money and church gives you a document which says that okay, the evil that you have committed has been pardoned. So a business was made out of this. Okay, inquisitions, remember this one also. इंक्विजिशंस क्या थी?
These were kangaroo courts. Kangaroo courts means, arbitrary courts where people were tried on the charges of having violated their religious conduct. And randomly, punishments were given to people. Very harsh punishments were given. Inquisitions के अंदर में. 2. तीसरा, confessions. What is meant by confessions? People had to go to the priests in the church regularly and tell the priest what evil things they have done, what wrong things they have done according to religion. The priest will then pray for their forgiveness. Okay? Pray that they will be forgiven. That was called as confessions. Now, what somebody does, as long as if I affect your well-being, then it's a crime. But if I do something wrong which does not affect anybody, it is not affecting anybody. That is not crime, that is a sin. Okay? And sin is between the individual and God. Right? It is up to God because it's not affecting you. Na? If it is affecting you, then I am a criminal. Otherwise, it's just a sin. Now that sin is between individual and God, but church brought this system of the priest between individual and God. You have to confess to the priest. You have to tell him regularly that you have done this evil sin. And then, he will pray for you. These were all different types of excesses that were being committed by the church. Okay? To change this, the movement of Reformation was started in Christianity. Within Christianity, people stood up to show how these systems do not have any base in the religion and these are just to perpetuate the control and luxury of the priestly class. You understand this? Renaissance, Reformation, Scientific Revolution, Enlightenment. And then Enlightenment leads to American Revolution, French Revolution, and many other developments. Clear? Okay? So, can you tell me what is meant by the American Revolution? War of Liberation. War of Liberation. Fought by 13 colonies of North America, through which they severed the ties with Britain, and birth of United States based on ideas of enlightenment. World history, or for that matter, anything that you do, UPSC preparation ho ya beyond that, please remember, always look for ideas. If you catch the idea, you will understand everything that is happening. अमेरिकन लोग उठ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, वे क्यों कर रहे हैं ना? We are, we create things twice. We create some, like this building is created. Before that, it was created where? As an idea in the mind. Okay? Don't just go by this external manifestation. Understand the main idea. If a country like USA is born, millions of people are working to create that. So that it has to first occur as an idea. Always catch the idea first. Got this? Okay? Chaliye. So this topic we'll see in sequence of following components. We'll have to first understand how the colonies came about. What were the relations of these colonies with England? Overall, the relations were very good, but that changes after the 7 Years' War and the Treaty of Paris. This treaty is signed in 1763. So this is like that threshold after which things will go downhill between 13 colonies and Britain. Why did the Americans do what they did? क्यों कर रहे हैं वो? How did the events transpire and we reached up to the war position? Role of thinkers. Remember, ideas are very important. तो idea कौन देता है? Thought leader देता है ना.
thought leaders. Why is a Mahatma Jyotiba Phule so important? Why is Mahatma Jyotiba Phule so important? Why is a Mahatma Gandhi so important? Yes, सब्सिक्वेंटली उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, वो सारी चीजें अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू बिगिन विद थॉट, ठीक है ना? वी ह्यूमन बींग्स, वी लाइक टू फील सेफ एंड सिक्योर, एंड फॉर दैट रीजन वी हैव अ हर्ड मेंटालिटी. हर्ड मेंटालिटी, वी फॉलो द ट्रेंड, उसके हिसाब से ही चलता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर में वो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी होती है, जिनके अंदर में सोच विचार करने की क्षमता होती है, who question the existing system, ठीक है, and they take a bold brave stand. These are thinkers of their times. So we'll understand what John Locke said, okay, what Voltaire said, what Montesquieu said, what Rousseau had to say, all of these people, and how that impacted the American Revolution. Then significance and personalities associated with the revolution. Okay, this we'll do tomorrow. American Revolution. Tomorrow we'll discuss, and hopefully we'll try to finish it tomorrow itself. All right. Okay. So we call it a day over here. If you have any questions, then please feel free to ask. Those of you who have written answers and would want me to go through your answers, I'll be available after the class in the K. Okay. Okay. Sure. Thank you so much. I'll see you tomorrow.